To give milk to the children, they were finding difficulty. To give Bournvita, if the child come and ask, Amma, I want Bournvita, I want Boost, where from they will get? They are telling with tears. And if children ask something, a biscuit to give, a chocolate to give, we have no money. That is the plight of our Ashas. Since 3 months, we have not been given payment. The state government nor the central government payment we have not got. ಕೆಳಗಿರೋ ಮೇಲಿರುವಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದೇನೋ ಎತ್ತಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಬರೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಎಎನ್ಎಂ ವೇಕೆನ್ಸಿದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಾವು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ. ಎಎನ್ಎಂ ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳು ತುಂಬಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೇ ಒಂದು 15 ದಿನ ಹಿಂದೆ DHO ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾಗ DHOಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಎನ್ಎಂ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3,000ದಿಂದ 10,000ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟು ಇದೆ. ಜೀವ ಸಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೇವೆ. ಈ ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರ ನೀವು. हमारे को जब केंद्र राज्य सरकार से 4,000 फिक्स पेमेंट आता सर, और केंद्र सरकार से नॉन एमटीटीएस 2,000 आता, और आरसीएस पोर्टल बोल के निकाले, इसमें जो सेव करते ना एएनसी पीएनसी बच्चों को मिजल दिया सो ये पूरा नहीं आ रहे. एक 10 एएनसी हुआ तो उसमें 2 एएनसी के पैसे आ रहे, तो 8 का पैसे कहाँ जा रहे? ये आशा लोगों को लॉस हो रहे. कई लोग आशा सिंगल है, डिपेंड इसके ऊपर, ये आशा काम पे ऊपर ही डिपेंड है ना, इसको भी और बहुत घर चलाना मुश्किल है, और बच्चों का फीस है, सब फ्यूचर है ना. हम लोगों को भी सबके कैसा सपने रहता ना, हम लोगों को वैसे सपना है ना सर, वो भी पूरा करना. इसलिए हमारे को परमिट करो बोल के हमारा मांगे है. आपका नाम? मेरा नाम उर्मिला, बीदर डिस्ट्रिक्ट 10 BMC हॉस्पिटल. प्रॉब्लम्स तो बहुत से है सर, बहुत से है, क्या बोलना है. अभी महंगाई तो ज़्यादा हो गई है, सब चीज़ें ज़्यादा है. अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर, परेशानी है. अब इस महंगाई में जीवन ये करना परेशानी है. तो हम लोग काम करते हैं, हम लोगों को सीधा पेमेंट नहीं आता. तो हमारा पेमेंट कितना है करके पूछते हैं लोग, किधर भी जाएंगे तो कितना मैडम आपका पेमेंट. मैं बताती हूँ, हमारा पेमेंट 4,000 फिक्सड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और इधर से स्टेट गवर्नमेंट से इंसेंटिव के तौर पे देता है. तो एक लोगों को आता है, एक लोगों को वो भी नहीं आता है. इसलिए हम लोगों को बहुत परेशानी हो गई है सर, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज. तो जो हमें केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से अलग अलग से मिलेगा, ऐसा नहीं बोल के पूरा एक ही डेट में आना चाहिए करके एक प्रोटेस्ट है हमारा. और हम लोगों को ESI PF जो वो भी देने का एक सरकार से हम लोग विनती कर रहे हैं. अभी आके हम लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम रहता है ना सर, वो सभी लोगों के जैसा भी हमारा वही इंश्योरेंस में कराना पड़ता है. ऐसा नहीं जैसा हम लोगों का अलग से, हम लोगों का भी रहता है ना सर, हम लोगों का अलग से हेल्थ चेकअप करवाना वो सभी रहता है. इसलिए वो सभी करवाने के लिए हम लोग इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. मेरा नाम तो गुलजार है, इधर BBMP से हूँ. The basic problem, what kind of suffering that ASHA workers are suffering from? Actually, the Ashas, they have been selected as single women or widows or ditched women. So they work among the people, 2,500 population they work, and in urban areas you can say that they were 2,500 is the maximum, but the workload 5,000, 10,000 it goes. So we are working among those people, and hardship, we put our hardship into that. Actually, we have been appointed for 2 hours, but the work goes for 24 hours. But then the payment what we are getting, it's very, 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 very less, and not timely payment, not timely.
Since 3 months, we have not been given payment. The state government nor the central government payment we have not got. And the hardship, you know, the price rise is going up. And whether we have to purchase oil, rice, what we should give to the children. I was talking to many of the ashas here. To give milk to the children, they were finding difficulty. To give Bournvita, if the child come and ask, Amma, I want Bournvita, I want Boost, where from they will get? They are telling with tears. And if children ask something, a biscuit to give, a chocolate to give, we have no money. That is the plight of our ashas. Despite of hard work, you are not getting payment. Yes, our work is 2 hours, but they make us to work 24 hours. So today we are on a protest demanding the government, the backlog, whatever we have suffered from this RCH portal, they should give all those backlog. Since 2017 we are suffering. So they should fill up all the backlogs and a timely payment, consolidated payment. What the department commissioner said now? He said that on 26th he will call for a meeting, all the problems of ashas, he will discuss with us, and finally he will give a conclusion. That is what he has told. So we are waiting for a result. If it is a good result, fine. If not, we will decide future what to do. Ma'am, see, the governments kept changing. There was BJP, then there is Congress, and there is coalition government. And the commissioners also kept changing. But your problem since 2017 continued. How do you see this? Government keeps changing, the policy is not changing, sir. We have demanded all the governments, JDS, Congress or BJP, whoever it is, they are not solving the problem. They are not at all interested. I don't know what they sit and discuss in the parliament. This is not an issue for them. See, you see, it's only quarter the strength of the ashas have come here. If all ashas come, you cannot fill this. There is no space here. So we have limited today. So how many ASHA workers have come from different parts of Karnataka? Nearly 10 to 12,000 ashas are present here. Your good name and designation, ma'am? I am Rama from AIUTUC, Karnataka Rajya Samyukta Asha Karyakartiyara Sangha. Thank you so much.